गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। गुड इवनिंग ऋतिक शर्मा एंड it's 7:30. So let us begin our evening session. Today uh, we are going to take up the polity, since we have taken up polity class 11th book today, political theory. So most of the questions I'm going to ask, I'm going to discuss with you with respect to the different chapters of the book Political Theory, NCERT, class 11th. Dear aspirants, here comes the question number one of the day. An important non-state actor in any democracy in present times is Parasuram Kumar. Very good evening. So, an important non-state actor in any democracy in present times is A. Judiciary, B. Local government, C. Civil society organizations, and D. Civil services. So, non-state actor, what should be the answer? Mr. Ritik Sharma, please inform uh, the other aspirants so that they should join our class. Okay, so please send a message in WhatsApp group so that everybody should attend, and please instruct them to write Civil Services Academy in YouTube so that they may get themselves connected. So the answer to this question is C, civil society organizations. Dear aspirants, this is an important non-state actor. Yes, Ajay Kumar ji, very good evening. So today, almost all questions, the MCQs, okay, relate to today's offline class. So political theory. Now, let us move to question number two of the day. Identify the leader who advocated the cause of scheduled castes. A. Machiavelli, B. B.R. Ambedkar, C. Karl Marx, and D. Aristotle. आपने बताना है अनुसूचित जाति के मामले को किन्होंने उनकी तरफदारी की, उनके मामले को आगे बढ़ाया. सो बी इज द आंसर एंड दिस इज करेक्ट आंसर. डियर एस्पिरेंट्स, बी आर अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर. अब तीसरा जो नेक्स्ट यह क्वेश्चन, that is the third question of the day, dear aspirants. The term politics is derived from, okay, the term politics is derived from A. Latin word polis, B. Greek word polis, C. English word political, and D. Greek word city state. What should be the answer? So it's very interesting, and almost all questions I am bringing before you from the book NCERT class 11 political theory. So A is the answer given by Ritik. Guddan Kumar ji, good evening, very good evening. Jaydev Roy, okay, Jaydev Roy is answering B, and B is the correct answer. So thumbs up. Okay, B is the correct answer. It's Greek word polis. Greek word polis. Dear aspirants, may I believe that you should read the book after the class and before the class so that you should grasp the important topics as well as the terminologies very well, because it's a UPSC examination, so you should be alert enough. You are required that way. So let us move to the next question. Human beings are unique because they, this is the question, MCQ. Human beings are unique because they, and we have option A, B, C, D. A, possess power of reasoning and reflection. B,
are social beings and depend on society. C. Participate in politics. And D. Never fight with one another. This statement is not true. We have to find out the correct option and which option is the correct. Are you able to answer it, dear aspirants? It's very nice. So the answer to this question is A. Okay, possess power of reasoning and reflection. Yes, Ritik, A is the correct answer. नो डी परशुराम जी नहीं है। ए ए होगा। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक क्योंकि उनके पास रीजनिंग है, तर्क करने की क्षमता है। जयदेव रॉय, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। So let us move to the next question, question number 5 of the day. Dear aspirants, a political party must have. अब पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनके पास क्या होना चाहिए? ए, party headquarters. B, an ideology. C, power seeking politicians. And D, a strong vote bank. अब इन चार चीजों में राजनीतिक दल के पास क्या होना चाहिए? Can you guess it? Can you imagine it? Can you? Jaydev Roy is telling B. And what is that B? B is an ideology. Absolutely correct. Wonderful. Great answer. Great answer. ऋतिक शर्मा, बी, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल पार्टी के पास एक आइडियोलॉजी तो होना ही चाहिए। हेडक्वार्टर होके क्या करेगा? ठीक है, उनका हेडक्वार्टर है। पावर सीकिंग पॉलिटिशियंस, सत्ताधारी, ये तो बिल्कुल नहीं। और स्ट्रॉन्ग वोट बैंक, वोट बैंक तो इलेक्शन के समय की बात है। आइडियोलॉजी लेकिन दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। डियर एस्पिरेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। परंपरागत विचार राजनीति के संबंध में क्या है? एबीसीडी। ए, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है? बी, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ द होल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सी, क्लास स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और डी, रिलेशनशिप between an environment and the system. So this question is a little bit clumsy. So please. So if you are able to answer it, the answer is not C, the answer is A. Politics is the study of a state and the government. यही है राजनीति की परिभाषा। Yes, Jaydev Roy, A is the correct answer. Parasuram Kumar is answering B, but no, A should be the answer. The concept of separation of powers. Okay. The concept of separation of powers. शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत is given by A, Plato, B, Rousseau. What is the full form of Rousseau? Political thinker, Jean Jacques Rousseau. C, Aristotle, and D, Montesquieu. What should be the answer? The concept of separation of power. So if you have gone through the book, you will be able to answer, dear aspirants. And D is the answer by Ritik Sharma, and thumbs up. Yes, this is the correct answer. Montesquieu ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को बताया। जयदेव रॉय, you please correct yourself. It was not Aristotle. अरिस्टोटल के समय तो सरकार नहीं बन पाई थी, तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत था, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ एंड यू शुड राइट इट इन द नोटबुक। दैट इज द की टू योर सक्सेस। Dear aspirants, I am not interested that you are knowing, you are answering the questions. No, I am not interested. I am interested in your, okay, in your not answering the question, because that is the reason, that is the area, okay, on which I have to work. Your performance needs those questions, those areas which are not reachable to you. So if you are answering 80%, that is not my concern. My concern is
not answering 20%, so that your performance should be 100%. And if you are going to deliver 100%, then certainly you are going to crack UPSC like a bang. Okay, during your maiden chance, that is the first chance. So dear aspirants, uh, very good. And Jadev Roy is telling, okay sir, yes, okay, very fine. So let us move to the next question. Identify the thinker. You have to identify the thinker associated with modern approach. Number, sorry, A, David Easton, B, Plato, C, Aristotle, and D, Socrates. So the moment the word modern approach is there, you should be cautious enough, because the three political thinkers are of ancient approach or medieval approach, you may say. So B is the call, but the answer is A. The answer is A. Okay, David Easton, Plato, Aristotle, and Socrates. Yes, Jaydev Roy, I have already read it. But for your better understanding, you may listen. A. David Easton, B. Plato, C. Aristotle, and D. Socrates. So D, C, B are not of modern, having modern approach. So the answer should be A, David Easton. So David Easton is a political thinker associated with modern approach. Dear aspirants, let us move to the next question. A scope of political theory. A scope of political theory is A study of power, B, to determine the political principles, C, a study of a state and government, D, all of the above. So what should be the answer? Are you able to answer it? Okay. If you are not able to answer, the answer is D, all of the above. Political theory का स्कोप क्या है? What is the meaning of scope? Vistar. So a study of power, yes, it's correct. To determine the political principles, yes, it is correct. A study of a state and government, this is political theory. So all of the above should be the answer. Okay. Now the next question, and this is going to be the final question related to chapter number 1. We will move to chapter number 2. What is the title? Freedom. Politics has been divided into two separate parts: theoretical politics and applied politics, by A. Aristotle, B. Machiavelli, C. Pollock, and D. Catlin. What should be the answer? Dear aspirants, the answer is C. Pollock. Polloch. Pollock, okay, has divided in two separate parts: the theoretical politics and applied politics. So Pollock, it's the principle of Pollock. Now, please let us move to the next chapter. And here we have freedom. The Sumit Tiwari is joining us. So it's very nice. Dear aspirants, we will take up some most important chapters, so that you should be able to grasp the political most important theories. So here is a question related to, okay, chapter number 2. The term liberty is taken from liber, Liber, which is a word from a Latin language, B, Greek language, C, English language, D, French language. So what should be the answer to this MCQ? Okay, Latin, Greek, English, or French. The word liver, Liber. If you are not able to answer here, let me speak. Okay, Jaydev Roy is telling A, Ritik Sharma is telling D. The answer is A. So once again, thumbs up for Jaydev Roy. Okay, so you are really well prepared, Jaydev Roy, and I'm undoubtedly, okay. Yes, Sumit Tiwari, you are also correct. So it's a very good going, great going, but the consistency is required.
while you are preparing for the UPSC type of examination, dear aspirants, the first requirement is you should be interested. The second requirement is you should be committed. And the third requirement is you should be devoted. Then consistency is required. ऐसा नहीं है कि आपने सोमवार को मंगलवार को पढ़ लिया, अब चलो 2 दिन रेस्ट करते हैं. नो, यूपीएससी में नहीं चलेगा. एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड एज ए न्यू डे. यदि आप सिविल सर्वेंट बन गए तो एक दिन दूसरे दिन के समान नहीं होने वाला है. इतनी चुनौतियां हैं, इतने चैलेंजेज हैं, उस सभी का मुकाबला आपको करना है. और इसलिए ये अभी से ही आपको आदत डालनी होगी. यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू परफॉर्म योर 100% एंड कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड. डियर एस्पिरेंट्स, दीज आर द टिप्स. आइए आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज. हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? जेएल नेहरू, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी और डी गोखले. Who was the writer of Hind Swaraj? Do you know? Jaydev Roy is telling yes, sir. Yes, very nice. So, what should be the answer? I am not finding. Sumit Tiwari is telling A. Who is A? Jawaharlal Nehru? No. C should be the answer, Sumit. ये महात्मा गांधी की लिखी हुई किताब है और उस किताब का नाम है हिंद स्वराज. ओके, नॉट ए, बट द आंसर शुड बी सी, महात्मा गांधी. और आप लिख सकते हैं, हालांकि यूपीएससी में ऑथर से मतलब नहीं है, बट यू शुड नो इट. क्यों? मेंस के एग्जामिनेशन में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और जितना आप कोट करेंगे मार्क्स उतना ही आएगा. यस जयदेव राय, यू आर करेक्ट. सी शुड बी द आंसर, महात्मा गांधी. Identify the focus of modern liberalism. A, family, B, community, C, individual, and D, society. So what should be the answer? The focus of modern liberalism. So the focus of modern liberalism is to individual. So the answer should be C. Yes, very good. C, not society. Okay. C, individual. Take for example HDI, Human Development Index, then per capita income. These are the yardsticks. So the answer should be C, individual, not community or society. Dear aspirants, negative liberty means, what is the meaning of negative liberty? A, liberty without restraints. B, liberty with some restraints. C, liberty with many restraints. And D, liberty with few रेस्ट्रेंट्स. तो ये निगेटिव लिबर्टी क्या होगी? तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होगी? जब रेस्ट्रेंट होगा. और यहां निगेटिव लिबर्टी है तो इसका मतलब है लिबर्टी विदाउट रेस्ट्रेंट्स. सो आवर आंसर शुड बी ए. आवर आंसर शुड बी ए. ओके, लिबर्टी विदाउट रेस्ट्रेंट्स इज निगेटिव लिबर्टी. आई होप you are learning this way. Dear aspirants, constraints on freedom emerge from social inequalities of a caste, imperialism and gender, caste, gender and colonialism. Okay, then gender, class and caste, political bondage, caste and gender. So the answer should be C, because gender, class and caste, these bring constraints on freedom. Okay, so this is the correct answer. Now please concentrate and answer this MCQ. Long Walk to Freedom is an autobiography of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Salman Rushdie and Aung San Suu Kyi. What should be the answer? Long Walk to Freedom. Who is the writer? Ritik Sharma is telling B, Nelson Mandela, and you are correct. Wonderful, great. Thumbs up for Ritik Sharma. So you people are the budding, okay, filled with energy. और आपने देश
को चलाना है। देश को चलाना क्या नेता बन के? बिल्कुल नहीं, सिविल सर्वेंट बन के। यू हैव टू इनोवेट। ऐसे ऐसे आइडियाज गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने हैं जो शाश्वत हो। ऐसी बात, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, बनाया, ये दोनों बातें हैं। तो जिन्होंने भी, जो राजमिस्त्री लगे, जो मजदूर लगे, उनका तो कहीं नाम नहीं है। ओके, सो नेम एंड फेम की चिंता नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ है। ओके, राष्ट्र पे समर्पित सब कुछ है। कंट्री के बेटरमेंट के लिए वर्क करना है, परफॉर्म करना है, सो दैट जो कुछ भी हो देश आगे बढ़े। देश सर्वोपरि है। आते हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और अब हम चलते हैं आपको लेकर इक्वालिटी पे। इक्वालिटी चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस वहां पे हैं जिसे आप देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फ्रीडम से हमने लिया, ओके, थियरी जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से हमने लिया। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3, और उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स कराएंगे, देन वी विल कंक्लूड आवर क्लास टुडे। In the sphere of religion, the Indian state policy, okay, A, maintains principal distance. B, promotes and protect the majority religion. C, believes that religion is a private affair and religious ceremonies should not be allowed in public. D, is to press forward the religious ideology of Hindutva. ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हिंदुत्व को फॉरवर्ड कहां कोई कर रहा है। तो ए शुड बी द आंसर, प्रिंसिपल डिस्टेंस, सैद्धांतिक दूरी। ओके, धर्म के संबंध में दिस इज द स्टेट पॉलिसी। यस, सो ए शुड बी द आंसर। डियर एस्पिरेंट्स, यदि आप नहीं जानते हैं, यस, जयदेव रॉय, वेरी गुड, ग्रेट, एक्सलेंट, सो योर आंसर इज करेक्ट। सो and if you don't know, please don't hesitate, please write it in your notebook. Okay, ऐसा भी होगा कि कुछ दिनों के बाद हम रिपीट करें इस क्वेश्चन को फॉर रिवीजन सेक। सो डियर एस्पिरेंट्स, द डिमांड फॉर लीगल इक्वालिटी वाज रेज्ड। ये लीगल इक्वालिटी, व्हाट डज इट मीन? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, फंडामेंटल राइट्स। वहां पे इक्वालिटी है, किसके लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 15। ओके, देन व्हाट इज देयर? अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी। देन व्हाट इज देयर? अनटचेबिलिटी, दैट शुड नॉट बी डन। एंड देन टाइटल, महाराजा धीराज, ओके, लाइक दिस, गॉन। So there are 5 articles in RTE, right to equality, dear aspirants. Now here we see the demand for legal equality was raised in A, 17th century, B, 19th century, C, 18th century, and D, 20th century. So what should be the answer? If you know, please write it in chat box. Otherwise, the answer is C, 18th century. 18th century is the answer to MCQ. Okay, C should be the answer, 18th century, not B. Yes, Ritik Sharma, wonderful, great. Some of the left parties in India, भारत में जो लेफ्ट पार्टी हैं वो क्या है? CPI, CPIM, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में जो साम्यवादी राजनीतिक दल हैं वो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन देखें। अंबेडकर एंड गांधी बोथ चैंपियनड द कॉज ऑफ अनटचेबल्स, अस्पृश्यता, बट दे कुड नॉट एग्री ऑन। लेकिन अंबेडकर और महात्मा गांधी में अंतर था, विभेद था। किस बिंदु पर? ए, रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर, बी, रिजर्वेशंस, सी, रोल ऑफ जुडिशियरी, एंड डी, रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री।
बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी में ओके रिजर्वेशन को लेकर मतभेद था. सो दैट वाज द बोन ऑफ contention between the two stalwarts. Okay, the sixth 5-year plan gave the status of partners in development to a Dalit, B tribal, C urban youth and D women. तो छठी पंचवर्षीय योजना में, यस जयदेव रॉय यू आर करेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? छठी पंचवर्षीय योजना में जो डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं, तो उसमें क्या स्टेटस हुआ? सो द आंसर इज डी, विमेन. विमेन शुड बी द आंसर. द स्टेटमेंट दैट मेन बाय नेचर आर इक्वल, ये किसने कहा था? कि मनुष्य प्रकृति से समान है. ओके, मेन बाय नेचर आर इक्वल. ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो and D Lasky. Jaydev Roy is telling D. Okay, women. Previous question. So please concentrate and answer this question. The statement that men by nature are equal is given by A. Hobbes, B. Locke, C. Rousseau, and D. Lasky. So the answer to this question is B. Ritik Sharma, B. That is Locke. मनुष्य प्रकृति से समान है, इक्वल है. सो द आंसर शुड बी लॉक. यस परशुराम जी, सी शुड बी द आंसर. सॉरी, बी इज लॉक. ओके, हॉब्स, लॉक, रूसो, लास्की, हेरोल्ड जे लास्की, बट द आंसर इज लॉक. यस, बी. सुमित तिवारी, जयदेव रॉय, बोथ आर करेक्ट. नाउ ओके, which of the following statement is correct? Okay, liberty, equality are opposed to each other. Liberty, equality are opposed to each other. B, liberty and law are opposed to each other. C, liberty and equality are supplementary, and liberty and equality are contradictory. What does it mean? How can you answer this MCQ? Dear aspirants, the answer to this MCQ is C. Okay, yes, Jaydev Roy, great, wonderful, and really I am very much impressed with your performance. You are maintaining the spirit. C is the answer. Ritik Sharma, wonderful. Liberty and equality are supplementary. What does it mean? एक दूसरे के पूरक. ओके, पूरक, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, पूरक परीक्षा. सुमित तिवारी, सी इज द करेक्ट आंसर. अब आइए, थोड़ा तीसरा चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया. अब सेकुलरिज्म को थोड़ा देखते हैं. सेकुलरिज्म. ओके, अजय कुमार ने भी सी आंसर दिया. बहुत अच्छी बात है अजय, कीप इट अप. बहुत अच्छा. आइए, इसमें सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी क्या है? लीडरशिप. और लीडरशिप का मतलब ये नहीं यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. और कैसे आप काम करा सकते हैं? टीम स्पिरिट से. अपने कार्यालय में जो टीम है, उस टीम को, उसमें तो कोई 3rd डिवीजन से पास करेगा, कोई 1st डिवीजन से पास किया होगा, किसी के पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी, कोई हिंदी में तीक्ष्ण होगा, किसी का मैथ अच्छा होगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, योर कैलिबर, कि किस तरह से आप एक टीम बना करके और गोल पोस्ट तक पहुंचते हैं. व्हाट इज गोल पोस्ट? योर अचीवमेंट, योर डेस्टिनेशन. गवर्नमेंट ने जो टास्क सेट किया है, उसको आप कैसे अचीव करते हैं? डियर एस्पिरेंट्स, आईएएस बनने का बेस्ट तरीका क्या है? आईएएस को जीना. आप हर पल सोचें आईएएस कैसे, तो प्रयास चलते रहेगा. और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो कर्म करते चलना है, पढ़ाई करते चलना है, पॉजिटिव माइंड से चलना है. बहुत नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पुस्तकों का बोझ हो जाए, बिल्कुल नहीं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, साउंड हेल्थ. पढ़ते पढ़ते बीमार नहीं होना.
पिन पॉइंटेड होके पढ़ना। आज हमसे एक प्रश्न आया, द हिंदू कैसे पढ़े? कई बार हमने आपसे चर्चा किया, द हिंदू को वैसे पढ़ें जैसे आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं। अब क्या उससे निकालना है? नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स, उसको बाहर निकालना है। टेक ए नोट ऑफ इट, नोट इट डाउन। आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, आपकी जानकारी मजबूत होगी। अब आप यहां पे बोलेंगे सर हम तो भूल जाते हैं, अभी भूल रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप नहीं भूलेंगे। ज्यों ही आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ज्यों ही आप में वो कर्तव्य भावना समाहित होगी, यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, बल्कि आपके जो संग्रह है ज्ञान का, ज्ञान के संग्रह की पराकाष्ठा होगी, आप शिखर तक पहुंचेंगे। ये अनंत भंडार है, मनुष्य को प्राप्त हुआ है। आप बहुत सारी बातों को स्मरण में रख सकते हैं। और एमसीक्यू, चारों के चारों जो आंसर होते हैं सत्य के नजदीक होते हैं, सही के नजदीक होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पिक अप द करेक्ट, दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट, नॉट ओनली करेक्ट बट मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट। आजकल झारखंड वालों को झारखंड कैडर मिल रहा है। ओके, सो मैंने क्लास में पूछा भी था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए अब ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमें लाना है। अब सेकुलरिज्म से 4-5 प्रश्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, द एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट इज ए फ्रांस, बी ईरान, सी जर्मनी एंड डी रवांडा। थियोक्रेटिक, ये कौन सा स्टेट है? थियोक्रेटिक स्टेट मीन्स द स्टेट हेड इज रिलीजियस हेड। धर्म का गुरु जहां पे स्टेट को हेड करता है, थियोक्रेटिक स्टेट। व्हाट इज दैट? जर्मनी? नो, ईरान। ईरान इज द आंसर, बी इज द आंसर, ईरान। यस, ऋतिक शर्मा, you are correct. So, and secular state means, okay, secular state, A, the state has a religion, B, the state is impartial in the matters of religion, C, the state is against religion, and D, the state is irreligious or dharmic. No, then what should be the answer? Dear aspirants, the state is impartial, B should be the आंसर। impartial, निष्पक्ष। ओके, निष्पक्ष, then it is secular. So we have already spent 30 minutes of precious time. Yes, Jaydev Roy, सुमित तिवारी, everybody is correct. So कौन क्या है मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं सुमित तिवारी को नहीं जान रहा हूं, जयदेव राय को नहीं जान रहा हूं, बिल्कुल जान रहा हूं। Identity should be kept secret, and that is the key to success. Dear aspirants, with these words, let us conclude our class today. So tomorrow at 7:30, once again I will be online, but the subject will be economy, Indian economy. So thank you for joining me in such a good number. Let me say good night to all of you. Bye bye.